Assalamu alaikum dear kids, public goods and services. Do you know about goods and services? According to economic theory, consumption of goods and services refers to provide satisfaction to the consumer. Business can be defined as an institution that provides goods and services to consumer in need of them. जी जनाब, बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस का मतलब होता है लोगों को, कस्टमर्स को वो चीजें और खिदमात फराहम करना जिनकी उन्हें जरूरत होती है. Goods. Goods are items like food, clothing, furniture, toys, anything visible and perceptible. The things that people buy for their needs or leisure times are goods. There are types of goods, as consumer goods are those which fulfill human needs and wants, food and clothing. Produced goods are those used to make consumed goods. Capital goods are those such as machinery needed to be used in the production of goods. जी, तो goods क्या होती हैं? वो तमाम चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि खुराक, कपड़े, फर्नीचर और हमारे खिलौने. अब जो गुड्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं. पहली कौन सी? कंज्यूमर गुड्स. और ये किस काम आती हैं? ये इंसानों की ज़रूरियात को पूरे करने के काम आती हैं. और दूसरी कौन सी हैं? प्रोड्यूस गुड्स. ये किस चीज़ के काम आती हैं? ये कंज्यूम गुड्स को बनाने में काम आती हैं. कैपिटल गुड्स हम कहते हैं उन मशीनरीज को जो कि इस्तेमाल होती हैं कंज्यूमर गुड्स को बनाने में. आइए अब जानते हैं कि सर्विसेज किसे कहते हैं. सर्विसेज. अ सर्विस इज एन एक्शन दैट अ पर्सन डज फॉर समवन इन नीड. इट कैन बी सेड एज अ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और वर्क फॉर अदर्स. इट हेल्प्स द पीपल टू मैन्युफैक्चर गुड्स. इफ गुड इज एन ऑब्जेक्ट, सर्विस इज द maker. Some of the service providers are life fighters, doctors, politicians, cleaners, drivers, postmen, police officers, teachers and barbers. Services किसे कहते हैं? अगर गुड किसी चीज का नाम है तो सर्विस क्या है? उसको बनाने का नाम है. Let's read about trade. Goods and services are a part of triangle and the third angle is trade. Trade is within the country as well as between countries. The importance of international trade for the development of country. The term trade refers to the exchange of goods and services. When trade takes place across the countries, it is called international trade. International trade enables the full utilization of resources. Underdeveloped countries are not in a position to use their mineral resources, so they export their raw materials to developed countries where the same are needed the most. Because of international trade, the trading partners got goods cheaper than otherwise. By virtue of international trade, consumer gets an opportunity to consume a large variety of goods produced by different countries. This improves the quality of life. International trade enables every country to dispose of its surplus production. Some countries produce more than their own requirement. They sell this surplus production in other countries and avoid the occurrence of deflationary pressure in the domestic economy. International trade encourages countries to compete with each other in the production of different kinds of goods at the low cost of production. Competitiveness stimulates productivity. It widens the event of the market. Every country makes an attempt to produce different goods in large quantity. This induces production on large scale and thereby generate economies of scale. जी बच्चों, ट्रेड का मतलब होता है तिजारत, चीज़ों का तबादला करना. और तिजारत मुल्क के अंदर भी होती है और मुख्तलिफ मुमालिक के दरमियान भी होती है. अब इसका क्या फ़ायदा होता है? अगर एक मुल्क कुछ चीज़ें अपने यहाँ नहीं बना पाता तो वो तिजारत के ज़रिए से चीज़ें दूसरे मुमालिक से हासिल कर लेता है. इसी तरह अगर किसी मुल्क में कोई चीज़ें ज़्यादा बन रही होती हैं तो वो क्या करता है? वो चीज़ें वो दूसरों को देकर उनकी ज़रूरत को पूरा कर देता है. इंटरनेशनल ट्रेड स्टिमुलेट्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एंटरप्रेन्योर्स. Novel techniques of production are devised to produce quality goods at a low cost. The advancement of technology is the key to economic development. International trade promotes cooperation among different countries. It creates an atmosphere of goodwill and friendship among the trading countries.
और हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं। जब वो ओपन मार्केट में वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो चीज़ों की क्वालिटी होती है कंपटीशन में आकर उनकी चीज़ों की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट्स, ऑल सच आइटम दैट वी सेल टू अदर कंट्रीज आर कॉल्ड exports. For example, rice, cotton, fruits, cotton yarn, cotton cloth, and sports goods are our major exports. Imports, all such items which we buy from other countries of the world are called imports. For example, heavy machinery, medicines, cars, aeroplanes, petroleum products, locomotives, etc. are our major imports. एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? वो तमाम चीज़ें जो हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाते हैं और पैसा कमाने के लिए दूसरे ममालिक को बेचते हैं, उन्हें हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। और वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में कम बनती हैं और हम दूसरों से ख़रीदते हैं, उन्हें हम इम्पोर्ट्स कहते हैं। दरामदाद और बरामदाद। Goods from services. Some goods that we use are the result of the services by different people and companies. For example, a chef provides the services of cooking food that people buy and eat, and farmer provides the service of planting and harvesting the food that people purchase and consume. Types of goods and services. Public goods and services, private goods and services. Let's talk about public goods and services. Public goods and services are all those goods and services that we all can use but don't lose its value. The ownership of these goods and services is in the hold of the government. For example, ambulance service is a public service that can be used by anyone when needed. Buses are the public goods used by the general public. Private goods and services. These goods and services are exactly the opposite of public goods and services. These are the goods which anyone buys for their personal need. Ownership is in the hands of the buyer. It can no longer be used once consumed, such as cooking oil that a lady uses to cook food. Some public and private goods and services. There are some public or private goods and services that we use in our daily life. For example, public goods and services, national defense, roads, highways, radio stations, water, parks, TV channels, air, movies, scenic views. Private goods and services, car, house, CD player, cooking oil, spoon, pencil, etc. How goods and services are provided? There are two ways that government provides goods and services. They are taxes and loan. Taxes, a compulsory contribution to state revenue imposed by the government on workers' income and business profits or added to the cost of some goods, services and transactions. Loans, a thing that is borrowed, especially a sum of money that is expected to be paid back with interest. जी बच्चों, हमने पढ़ा कि गुड्स जो होती हैं या सर्विसेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो जो हमें गवर्नमेंट फराहम करती है और दूसरी वो जो कि हमें दूसरे लोग फराहम करते हैं। और हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई गवर्नमेंट हमें ये चीज़ें फराहम करती है तो वो पूरा कैसे करती है सारे खर्चे को, या तो हमें टैक्स पे करने होते हैं चीज़ों पर या फिर हमें लोन दिया जाता है। तो इस सबक में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि गुड्स तीन तरह की होती हैं। हमने ये पढ़ा कि सर्विस वो एक्शन होता है जो कि कोई शख्स जरूरत में किसी दूसरे के काम आने के लिए करता है। हमने पढ़ा कि ट्रेड चीजों के तबादले का नाम है और ट्रेड विद इन अ कंट्री भी होती है और दूसरी ममालिक के साथ भी होती है। हमने जाना कि हम अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए कुछ चीजें बाहर से मंगवाते हैं और कुछ चीजें बाहर भेजते हैं।